आणि व्हीसी सर पण थोड्या वेळाने जॉईन होतात आहे. त्यांच्याकडे एक दुसरा प्रोग्राम आहे, त्याचं इनॉग्रेशन आटपून असं जॉईन होतात. हो, काही प्रॉब्लेम नाही मॅडम, मी ऑफिसच आहे. चालेल, ठीक आहे. 2 मिनिटात करू आपण. सो संयोगिता मॅडम, संयोगिता मॅडम. हो मॅडम, आवाज. हा, 1-2 मिनिटात करू आपण. हो हो, काही हरकत नाही. तयार आहे? जॉईन. हो, ठीक आहे, ठीक आहे.
Good morning, one and all. Sir have joined. So we Good can morning, start ma'am. the program. Sayogita Yes. madam, please. Yes. Shall I start? Yes, yes, please. Yes. So very good morning to all of you. We are here to celebrate the International Women's Day. We celebrate the presence of women in the society and to celebrate her achievement. This day is for the acknowledgement of the value of women in our life. And the most important thing is this day is celebrated internationally. All over the world, this day is celebrated. So I, Dr. Sayogita Deshmukh, in charge Women Entrepreneurship Cell, welcome all of you. And I request Dr. Swati, Professor Dr. Swati Sherekar Madam, Director IIL, for welcome speech and the introductory remark. Over to Swati Madam, please. Thank you, madam. Good morning, one and all, and very warm and heartiest welcome to all the dignitaries present here. Dr. Dilip Malkhede, Honorable Vice Chancellor, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, who is the constant source of inspiration for all of us. Dr. Nisha Sonare, Managing Director, Special Biochem Private Limited. Dr. V.M. Thakre, Head, Department of Computer Science and Engineering, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Dr. Sayogita Deshmukh, Coordinator, Women Entrepreneurship Cell, SGB Amravati University, my colleagues and my dear student friends. I, Dr. Sherekar, Director, Innovation, Incubation and Linkages, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, welcome you all on this August occasion of International Women's Day. Dr. Nisha Sonare is a person with full of commitment, dedication and determination, a lady entrepreneur, a Vidarbha Kanya, who is recognized globally. Many awards are there in her credit. She is doctorate in management, established her company in 1999 with the name Special Biochem Private Limited. Presently, she is working as managing director for her company, that is Special Biochem Private Limited. She has various different products producing in her company, that biofertilizers, micronutrients, organic fertilizers, pesticides, plastic products, home care products. She has spread her business all over the country. Presently, she has more than 500 employees. Number of awards are there in her credit. She is the first industry award by the District Industry Center, that is DIC, presented by State Minister Mr. Praveen Potepati. She has awarded with the Vidarbha Gaurav Puraskar for the Best Women Entrepreneur by Vidarbha Industries Association, presented by Nitinji Gadkari. Vidarbha SME Excellence Award presented by Maharashtra State Minister Mr. Subhash Desai, and many more awards are there in her credit. Along with that, she has contributed in the policy making for the women entrepreneurships at the state government level. Such an eminent personality, today she is with us. I am very much thankful to the madam for sparing her valuable time for us. As you know, International Women's Day is celebrated annually on March 8th to celebrate the cultural, political, and socio-economical achievements of women. It is also a focal point in the women's rights movement, bringing attention to issues such as gender equality and violence
and abuse against the women. The theme for this year for International Women's Day, it is gender equality today for sustainable future or sustainable tomorrow. Friends, it's the time to see role of women in the socio-economic growth of the world, especially in the domain of entrepreneurship, which is a very challenging domain. While women running their own businesses faces multiple difficulties, the biggest of these is the gender biasness and access to the finance. Their loan applications are more likely to be delayed or rejected. It is what the studies shows. Gender bias, restrictions on mobility, and social norms are the other hindrances. Still, the increasing presence of women as entrepreneurs has led to the challenge in the demographic characteristics of the business and economic growth of the country. Women-owned businesses, enterprises are playing a prominent role in the society, inspiring others and generating more employment opportunities in the country. There is a need for substantial growth of the women entrepreneurs to promote a balanced growth in the country. And Startup India is committed to strengthening the women entrepreneurship ecosystem through policies and initiatives and creation of enabling network. 2019 Global Buying Report estimated that women own 14 million to 16 million, or we can say 20% of all enterprises. Earlier it was in 2013 and 14 calculated that women own only 13.76% of enterprises in India. India has the third largest startup ecosystem in the world, expected to witness growth of consistent annual growth of 12 to 15%. Significantly, the number of women entrepreneurs stood at 14%, up from 10% and 11% in the previous 2 years. In case of Global Innovation Index also, India has raised its rank from 52 to 46. Now we are below 50. That is the remarkable achievement of the India. In case of unicorns also, the latest figures which is declared on 9th February 2022, India has reported record-breaking 88 unicorns with a total valuation of $296 billion. That is, we can say, a unicorn startup in every 4 days. This is the speed of the India to produce the unicorns. As we know, the unicorn, it is the startup value of more than $1 billion. Looking towards the entrepreneurship, we can say there are certain skill sets required for the entrepreneur, just like the persistence, self-confidence, risk taker, communication skill, good HR skill, problem solving and decision making skill, technical skill. Along with that, the critical and creative thinking up to innovative design, or we can say the out of box thinking. That is the ideation. Critical and creative thinking is an integrated skill that involves generating and evaluating ideas around a core knowledge. Ideation plays very important role. Ideation is aimed at solving real world challenges through the technology. On the occasion of International Women's Day, we are launching Women-led Ideathon, that is ideation competition. This Women-led Ideathon is planned to encourage the student to innovate and leverage technology towards
betterment of women. This ideation challenge is a unique opportunity designed to stretch your mind and challenge what you think for equality and fairness of women. The competition is divided into sub-themes related to women as follows. First one, the self-defense, health and hygiene, entrepreneurship, technology for women, legal aid, and safety and security of the women. Competition is open from 8th of March up to 10th of March. You can submit your idea in the given Google form with the abstract. The best 3 ideas are awarded with the certificates and the prizes. If the idea is really worth, then the necessary support will be provided to incubate the idea. I wish all the best to all participants in the Ideathon. I express my hope that the new talent will come forward with the innovative ideas and able to convert it into innovative product. To provide a platform for various newcomers in the field of science and technology and to give an opportunity for the various achievement, IIL is organizing the Women-led Ideathon and the Startup Fest for the new incoming talent. At the end, I conclude with the commitment to provide an innovation promotion platform for the academicians and researchers to foster a culture of innovation and entrepreneurship in the society. And Incubation Center is always with you from startup to unicorn. Thank you. Thank you very much. Thank you, madam, for your illustrative introduction of our resource person and presenting the scenario of startups in India. Again, madam has declared the very important that the real celebration of International Women's Day, that women-led ideathon, that is very much important for all the students and teachers and researchers, all can participate in this and express your ideas for celebration of this International Women's Day. And I think it will be the real celebration. It will be the supporting hand. It will be the productive celebration of the International Women's Day. Thank you. Thank you very much, madam. Now I would like to invite Dr. Nisha Sonare, madam. She is Managing Director, Special Biochem Private Limited, Amravati, an iconic lady of this region. I welcome our resource person, Dr. Nisha Sonare, madam. Madam, please. Thank you, ma'am. Thank you, University and Dr. Sherikar ma'am for giving me this opportunity. हमारे इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि आपने इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे कुछ शेयर करने का, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। मैम, आपने अभी जो बोला वो, और इस जो भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे उनके लिए मुझे लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर वो समझे तो उनको इतना आपने ऐसे बोलते हैं ना, थाली में परोस के दिया है, तो अगर वो समझे तो, और इसमें से अगर 3-4 लोग भी इंस्पायर हुए और कुछ कर पाए तो शायद हमारे अमरावती की इकोनॉमी को चेंज कर दे, या इंडिया की या ग्लोबल, पता नहीं, हो सकता है। लेकिन आपने जो एफर्ट्स दिए हैं मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली अमरावती में इस तरह का काम हो रहा है। और आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया तो मैं सोच रही थी क्या मैं सच में वही हूँ, क्योंकि अगर मैं 27-28 साल पहले की बात करूं तो मेरी कहानी बहुत ही सिंपल थी, और ये आज मैं जो सुन रही हूँ अपना इंट्रोडक्शन, वो शायद कभी नहीं होता अगर मेरी एक सोच ने मुझे बदला नहीं होता, मेरे जुनून ने, मेरे पैशन ने मुझे बदला नहीं होता। मैडम, प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट योर वीडियो इज ऑफ, प्लीज put on your video. मैडम,
नहीं, मैंने लैपटॉप शुरू किया हुआ है और शायद उसमें आवाज क्लियर नहीं आएगी। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। क्या करूँ क्या? Madam have joined with 2 different devices. Yes. वो इको होगा फिर थोड़ा। Okay. क्या ठीक है? आवाज आ रही है बराबर? आवाज। Madam, you are visible also and audible also. Please continue. ओके। एक्चुअली ये मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, अगर मैं इस बारे में शुरुआत करूँ तो मुझे लगता है कि मेरे फादर इंजीनियर थे और उनके साथ में मैं कभी कभी मुझे जाने का मौका मिलता था, क्योंकि वो एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में इंजीनियर थे और प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में उनके साथ में कभी मैं विजिट करती थी, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती थी वो मुझे काफी अट्रैक्ट करती थी, काफी फैसिनेट करती थी। तो वहां से कहीं तो भी मुझे लगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना मुझे कभी भी काफी अच्छा लगता था, कि मतलब वो चीजें मुझे अट्रैक्ट करती। मुझे लगता है मैं अपने पर फोकस करूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो यहाँ से मुझे जब लगा कि क्या करना है, क्योंकि हमारे जनरेशन में ऐसा लड़कियों के लिए था नहीं कि पढ़ाई होनी चाहिए और करियर होना चाहिए, और मेरे फैमिली बैकग्राउंड पे कुछ ऐसा था नहीं। तो सीधी सी बात थी कि लड़कियों के लिए करियर बोले तो एक शादी होना और फिर उसके बाद में आपके जो लाइफ होना है, बच्चे, फैमिली, वही था। और उसमें कुछ गलत भी नहीं था, जो समय था ऐसा ही था। लेकिन मेरे इसमें था कि मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ तो भी करना है। शादी के बाद में जब मैं अमरावती आई और इस तरह के फैमिली में आई जहाँ पे सर्विस और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, और वहाँ पर मेरे फैमिली में ज्यादातर लोग टीचिंग लाइन से ही थे और घर में खेती बाड़ी थी। तो इस तरह से कि और घर में मेरे अलावा मैं बड़ी बहू और घर में कोई लड़की भी नहीं थी, तो मेरे ऊपर नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। जिस तरह का माहौल था मेरे लिए वो बहुत ही अलग था, और उसमें एक मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। लेकिन होता है कि जब आपकी शादी होती है और आप फैमिली में जाते हैं तो बस आप इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, सास ससुर, फैमिली, बच्चे, और करियर वगैरह मेरे इसमें कहीं था ही नहीं। लेकिन मैं देखती थी कि मेरी फैमिली में जिस तरह का माहौल था, हमारे यहाँ क्योंकि लड़की कोई थी नहीं, सारे लड़के ही थे, और उनको बहुत बोला जाता था कि आप पढ़ाई करो, अपनी डिग्री कंप्लीट करो, अपना जॉब के लिए सोचो, और उनके लिए स्पेशल टाइम निकाला जाता था, एफर्ट्स किए जाते थे उनके लिए, स्पेशल पूरा डिजाइन करके दिया जाता था उनका करियर। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मेरे लिए क्या वे आउट होगा, मैं कहाँ पे क्या कर सकूंगी। क्योंकि अगर मैं सोचूं तो उस टाइम मेरे लिए 1 घंटा निकालना भी मुश्किल था, क्योंकि किसी का ब्रेकफास्ट, किसी का खाना, कभी प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स, और इस तरह की जो सारी व्यवस्था हमारे घर की थी, तो उसमें ये सब बहुत मुश्किल था कि मैं अपने करियर के बारे में सोच सकूं। जहाँ पर मेरी फैमिली में जहाँ सारे लड़के अपने करियर बनाने के लिए उनको स्पेशल उनके लिए अरेंजमेंट था, वहां पर मैं अगर बोलूं कि नहीं, मुझे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में कुछ करना है, मुझे अपना कुछ इंडस्ट्री चालू करनी है, मुझे अपना कुछ करना है, तो वो एकदम एलियन थॉट था उस चीज के लिए। और मुझे भी समझ में नहीं आता है कि वो जैसे जैसे मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी भी उस टाइम इतनी ज्यादा नहीं थी और हम बहुत साधारण फैमिली से थे, तो ऐसा लगता था कि घर में और कुछ कमाने का साधन होना चाहिए, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मुझे भी बहुत कुछ आइडियाज आते रहते थे, और रात को 1-1 डेढ़-डेढ़ बजे तक मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं कि बॉटल भरना, ये करना। और उस टाइम मुझे जो देखते थे उनको लगता था कि मतलब आप समझ सकते हैं उसको। तो उस टाइप का व्यवस्था में मैंने काम की शुरुआत की, बहुत सारे छोटे मोटे घर में जितने प्रयोग हो सकते थे, बिना पैसे के, बिना लोगों को बताए, बिना पूछे। वो एक समय ऐसा भी था जब मैं उस टाइम यहाँ पर आई थी, तो किसी से शेयर करना ये सब, और स्पेशली उस टाइम तो एक मराठी बैकग्राउंड से मैं थी, तो उसमें किसी लेडी का तो छोड़िए, किसी लड़के का, किसी जेंट्स का भी ऐसा सोचना कि मैं इंडस्ट्री में जा रहा हूँ और मुझे इतना काम करना है, तो हर फैमिली उसके अगेंस्ट होगी। तो फिर मैं तो एक लेडी थी और मेरे बच्चे और ये, तो इस तरह से लेकिन मेरा जो जुनून था वो चालू था, कि मुझे किसी भी हालत में शांति नहीं थी कि मुझे अपना कुछ करे।
जब तक मैं अपना कुछ कर नहीं लूं। लेकिन मैं अमरावती में जब आई तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी। एक बार मेरा मन होता था कि मैं MIDC में कहीं जॉब करूं तो मुझे इंडस्ट्री का फोकस मिलेगा, कुछ भी पैसे मिल जाए, मैं सिर्फ चाहती थी कि मुझे इंडस्ट्री यहाँ की देखने मिले, मुझे कोई कॉन्टेक्ट मिले जिससे मैं यहाँ की इंडस्ट्री को समझ पाऊँ। लेकिन लकीली मेरे घर के पास में DIC था और वॉकिंग डिस्टेंस में था, तो मैं अपने बेटे को गोद वगैरह में उठा के चली जाती थी। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते थे वो सब बहुत पढ़ती थी। तो इस तरह से मुझे कुछ कुछ प्रोसेस समझ में आने लगे और वहां पर फिर मैंने इंक्वायरी निकालना शुरू कर दिया। वो लोगों को भी लगता था कि ये लेडी बच्चे बच्चे को लेके आती है और इस तरह से इसका बातें करती रहती है, पता नहीं वो भी मेरे लिए किस तरह। उस टाइम पौनीकर साहब थे DIC में। मैं उनसे जाके मिलती थी, KVIC में जो थे उनसे जाके मिलती थी, क्या कर सकती हूँ मेरे इसमें। तो उस टाइम मैंने बहुत सारे छोटे मोटे काम किए हैं, मशरूम्स वगैरह, डिस्टिल वाटर वगैरह, और घर में मैं चिप्स को तलकर छोटे छोटे पैकेट बनाती थी 2-2 रुपए के, और उसको किस तरह से मैं मार्केट में बेच सकूं। तो ये सब मेरे प्रयास रहते थे। और एक्चुअल में मुझे लगता है कि मैं इतनी खुश होती थी जब मुझे कुछ भी रिटर्न मिलता था। मुझे याद है कि चिप्स को बेचने के बाद में मुझे पहली बार 200 रुपए मिले थे, और वो 200 रुपए मुझे इतनी खुशी दे गए जो आज करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होने के बाद में मुझे वो खुशी नहीं आती है। लेकिन उस टाइम, क्योंकि आज मुझे समझ जाता है कि अच्छा ये कैलकुलेशंस है, लेकिन उस टाइम मेरे पास में कोई भी ना नॉलेज था, ना एजुकेशन था उस तरह का, ना मुझे उस तरह के कमर्शियल कैलकुलेशंस आती थी, तो ना विजन था उस तरह का। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी कि मैंने 200 रुपए, इस तरह की चीजें मुझे इंकरेज करती थी। मेरे हस्बैंड क्योंकि PhD केमिस्ट्री थे और बडनेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो उनको कभी मेरा ये पटता नहीं था, और इस तरह के काम जो मैं करती थी वो कई बार उनको लगता था कि शोभा भी नहीं देते हैं कि बॉटल बना या इस तरह के जो छोटी मोटी चीजें मैं करती रहती थी। तो वो कई बार बोलते थे की कशाला सुखाचा जीव दुखात टाकतं। पर मेरा जो पैशन था, मेरा जो जुनून था, मेरे थोड़ी देर के लिए मैं सोचती थी कि हाँ मैं शायद, लेकिन फिर मैं वही सब इसमें जब भी मैं, एक और अच्छी बात थी कि मेरी मायके में भी और की था कि हम मैगजीन्स बहुत आती थी, और मुझे कभी भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का क्योंकि वो जमाने में तो टीवी भी नहीं था, टीवी भी बहुत बाद में आया। और तो उस टाइम मैगजीन्स जो आती थी उसमें बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स आते थे, और उसमें 1-2 लेडीज़ थी उस टाइम, वो शहनाज हुसैन भी थी, उस टाइम एक इंडस्ट्री थी उसकी, मिडल ईस्ट कंपनी, रीता सिंह, वो उनके कुछ आर्टिकल्स आते थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे इतना इंस्पायर करती थी, और जब मैं उनका स्ट्रगल देखती थी, जो फेलियर भी बहुत थे और मेरी भी लाइफ में फेलियर तो था ही था, लेकिन जब उनका मैं पढ़ती थी मुझे लगता था अच्छा ठीक है, फिर मुझे तो कुछ तो अच्छा दिया भगवान ने। तो मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और यही वजह है कि शायद मैं आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि बहुत मैंने बेवकूफ़ियाँ की हुई है, बहुत मैंने धोखे खाए हैं, बहुत मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा क्रेज़ बना रहा, तो शायद उसका रीज़न ये है कि मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखती रही। तो अमरावती में जब मैं आई उसके अ DIC में जब मैंने जाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मिटकॉन है, और मिटकॉन कोई क्लास ले रहे हैं, तो फिर मैंने वो क्लास वगैरह जॉइन की। क्लास जॉइन करने के बाद में मुझे समझ में आया कि बैंक स्पेशली कुछ लोन देती है इंडस्ट्री वगैरह के लिए। तो और मिटकॉन में जाने का फ़ायदा ये हुआ जहाँ पे मिस्टर अनिल करवा थे, और उस क्लास में भी मेरी एज तब 35-36 हो चुकी होगी। तो उस क्लास में भी सबसे ज़्यादा एज की मैं ही थी, और उसमें भी सब ऐसा लगता था कि अब ये लेडी क्या करेगी? अब इसकी इतनी एज हो गई है, बच्चे लेके घूम रही है, इसकी फैमिली है, सब है। तो एक टाइम मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आता था वो सब देख के कि अरे अब नहीं किया तो मेरी तो ज़िंदगी गई, अब नहीं कर सकती मैं। अब देना तो 100 नहीं 500% मुझे देना पड़ेगा। ये मेरे दिमाग में कहीं तो भी अ, आ गया था कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और जब मिटकॉन में उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या करेंगी, तो मैंने काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बताए, और वैसे ही मैं जब कहीं जाती थी और इंडस्ट्री के ऑफिसेज़ वगैरह में, तो मेरा थॉट प्रोसेस वही रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लोग मेरे पर हँसते थे, और कुछ नहीं हँसते होंगे तो पीछे पता नहीं क्या सोचते होंगे, लेकिन इस तरह का वो समय था, क्योंकि उस टाइम लेडीज़
भी नहीं और जेंट्स भी बहुत कम थे। मेरे साथ में जो क्लास करने वाले थे वो सब्जी बेचने वाले थे कुछ, लेकिन उसमें दाल मिल जिनकी ऑलरेडी थी और वो एक्सपेंशन में जाना चाहते थे, उस टाइप के लोग थे। तो ऐसा ये सारी चीजों से मुझे माहौल मिला और मुझे पता चला कि अमरावती में इंडस्ट्री के लिए क्या है, क्योंकि मेरे घर में और कहीं पे ऐसा मुझे माहौल मिला ही नहीं था। तो वो एक मेरे लिए काफी अच्छी चीज हुई कि मैं डीआईएससी मैंने जाना शुरू किया। दूसरी बात ये हुई कि मुझे समझ में आया कि मेरा नॉलेज आज के जमाने में बहुत पीछे है। तो इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को बहुत रिक्वेस्ट किया, कैसे भी किया करो मुझे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में डालो आप, क्योंकि मुझे पता चला कि वहाँ पे बहुत अच्छी रिच लाइब्रेरी है और उसमें काफी अच्छे सेक्शंस है जो माइक्रोबायोलॉजी पे है, जो फूड इंडस्ट्री पे है, वेस्ट मैनेजमेंट पे है, जो मेरी काम की सारी चीजें उस टाइम मुझे समझती थी। तो इस तरह से मैंने फिर वो मेहनत की और इंडस्ट्री में, लेकिन यूनिवर्सिटी में कैसे जाऊं, और मुझे डीआईसी तो मेरे घर के पास था। तो उस टाइम मैंने एक मेरे फादर के दिए पैसे उसको जमा करके मैंने कुछ 12,000 की उस टाइम लूना थी मोपेज। तो वो मैंने कुछ 10,000 मेरे फादर के दिए हुए और कुछ इनके पैसे लेके लूना कर दिया। और मेरा वो लूना खरीदना मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मैं बोल सकती हूँ कि उस लूना को मैंने कई साल नहीं बेचा। मेरे हस्बैंड थक गए कि अब इसको छोड़ दो, तो पर वो मेरे लिए इतनी प्रेशियस थी कि उस लूना ने मेरे लिए मेरी लाइफ बदल के रख दी। मुझे वो फ्रीडम दिया कि मैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर उससे जा सकती हूँ और मुझे कहीं भी जाना है। और मुझे फिर जब मैं घूमने लगी तो मुझे एक चीज और समझ में आई कि अमरावती छोटी जगह है तो उसका एडवांटेज मेरे लिए बहुत है। और दूसरी बात है कि रात को 8 बजे पे मैं घूमूं तो अमरावती बहुत सिक्योर प्लेस है। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे ये तो बहुत बड़े वरदान दिए हुए हैं कि मैं सेफ हूँ और मैं मुझे सिर्फ अपने लिए क्या करना है वो मुझे करना है। मैंने फिर अमरावती यूनिवर्सिटी का इसलिए भी बहुत मैं एहसान मानती हूँ कि उसका जो भी सेक्शन होगा, मैंने करीब करीब सारे इंडस्ट्री की बुक्स वहाँ पे जो भी अवेलेबल थी उस टाइम वो मैंने पढ़ ली और मुझे काफी अच्छी लगती थी वो सारी चीजें। और उन्होंने मुझे उस टाइम के लिए तैयार किया, क्योंकि वो उस जमाने में ना इंटरनेट था ना कुछ था। आपको कुछ 2-3 मैगजीन्स थी, उद्यमिता वगैरह, वो मैंने इंडस्ट्री के, क्योंकि मैगजीन्स पे नहीं थी तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी क्या हो रहा है। और ऑफिस में जितना मिल सकता था उतना वो लोग हेल्प करते थे, लेकिन उसके आगे तो आज जैसे इंटरनेट है उस टाइम तो ये इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं थी। हर चीज के लिए पैसे थे और पैसे मेरे पास क्योंकि थे नहीं। तो इस तरह फिर मिटकॉन से मैंने करने के बाद में काफी लोन का प्रयास किया। लोन के इस साथ में एक बात ये हो गई कि मुझे कुछ कुछ लगा कि अब हो सकता है, लेकिन जब मैं बैंक में गई तो वो बोलते आप मॉर्गेज दो। मॉर्गेज का मतलब होता है कि आप उस पैसे के अगेंस्ट में आप कुछ तो भी चीज वहां पर गिरवी रखिए, गहान रखिए जो बोलते हैं। तो वो मेरे पास, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, लेडी के नाम पे नेचुरली कोई प्रॉपर्टी रहती नहीं है, और है तो उसको बेचने का हक उसको रहता नहीं। आपकी गोल्ड है ये है, आसानी से आप नहीं बेच सकते हैं अपने कामों के लिए। तो ये सारी चीजें ऐसे क्या, मैं फिर मुझे समझ में नहीं आया कि पैसे कहाँ से लाऊं। तो उस टाइम फिर मैंने अपने हस्बैंड को बहुत कन्विंस किया कि आप कुछ भी करो, मुझे इतना करके दो। और मुझे आ, उस समय काफी मैं ग्रेटफुल होंगी इनकी कि इन्होंने उस टाइम मुझे सच में समझा और कुछ पैसे का सपोर्ट किया और मुझे वो लोन मिला। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये स्कीम मुझे मिली वहां पर। और फिर इसके बाद से मेरी जर्नी कुछ रास्ते में आई। इसके साथ में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के कॉलेज में किसी काम से एक साइंटिस्ट आते थे और उनकी एज काफी थी। और लेकिन मैनेजमेंट के कुछ कामों की वजह से वो आते थे, लेकिन उनके पास में इतना फंड नहीं होता था कि वो होटल वगैरह में रुक सके। तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे, उनको घर पे ले आते थे उनकी एज देखते हुए कि उनको तकलीफ होगी। तो वो जब मेरे यहाँ आते थे तो मैं उनको बहुत सारी चीजें बात करती थी। खाना वाना के बाद में मैं उनके साथ में बैठ के, तो डॉक्टर लाम्बर्ट था उनका नाम। उन्होंने काफी एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे जिस तरह से बताना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ भी खेती बाड़ी थी और जिस तरह से, तो मुझे कहीं तो भी ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। सब पेड़ पौधे और फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर वगैरह सारी चीजें। तो उनके साथ में मैंने एक चीज देखी कि टेक्नोलॉजी, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो जीरो टेक्नोलॉजी पे कैसे आ सकती है, और टेक्नोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है और
वो पूरे प्रोजेक्ट को एक नया शेप दे सकती है। मैडम अभी आपने वो डिस्कस भी किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह और बाकी ये सब सब्जेक्ट जो है, तो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी इतना बड़ा कॉन्फिडेंस देती है कि मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि मुझे अब कहाँ काम करना है। और मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे बायो फर्टिलाइजर में ही काम करना है। जस्ट अ मिनट। तो मैंने फिर इस फील्ड में ही काम करना शुरू किया, और यहाँ पर जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलती थी उसके लिए एग्जीबिशन वगैरह सारी चीजें। इसमें एक बात एक अच्छी हुई कि मुझे 94 में बेंगलोर जाने का मौका मिला। मेरी सिस्टर वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और उसने मुझे अपने 5 स्टार होटल के विंग में अपना एक ऑफिस दिखाया। जस्ट अ मिनट मैम। उसे अपने एक 5 स्टार होटल के एक विंग में उसका ऑफिस था। उसमें उसने मुझे ले गया और वहां पर मुझे बताया कि देखो ये कैफेटेरिया है, ये जिम है, हमारे फ्लेक्सिबल आवर्स है काम करने के लिए, और ये इंटरनेट है। तो ये बाकी चीजें तो ठीक थी, लेकिन ये इंटरनेट क्या है, तो मैंने जब ये समझा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चीज इतने सालों से ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गई। और मैंने अमरावती जब मैं आई तो मैं और मेरी सिस्टर ने मुझे उस टाइम मेरा मेल आईडी भी बना दिया, nishasonaria@gmail.com। मुझे लगा कि अब बस मैं अमरावती जाऊंगी और बीएसएनएल ऑफिस में जाऊंगी, ब्रॉडबैंड लगाऊंगी और अपना काम शुरू करूंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं जब अमरावती आई और ब्रॉडबैंड के ऑफिस में मैंने 10 बार चक्कर लगाए, तो शायद उनको पता भी था कि नहीं कि क्या है ब्रॉडबैंड। और इस तरह से ऐसा हुआ कि ब्रॉडबैंड को सुना सुना के पूछ पूछ के मैंने उनको बहुत तंग कर डाला। लेकिन जब ब्रॉडबैंड आया वो मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान था। उसने मेरी दुनिया बदल दी। इंफॉर्मेशन और सारी चीजों को मैं जितना समझ सकती थी ब्रॉडबैंड की वजह से मैं आज हूँ। उस टाइम ऐसा भी हुआ कि आ, इंडिया में नया नया समय शुरू हुआ था इंटरनेट का। तो treatindia.com वो भी शुरू हुआ, और मैंने शायद सबसे शुरुआत में जो अमरावती वगैरह से लोगों ने रजिस्टर किया होगा, 15 साल 16 साल, अगर आप मेरा अभी भी देखें मेंबरशिप रिकॉर्ड तो इतने सालों का उसमें है। मुझे लगा कि अब तो मैं गांव से ग्लोबल हो जाऊंगी। यहाँ पे एक बात और थी कि जो इंटरनेट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उसके बाद में मुझे बहुत सारे एक्सपोजर इतने अच्छे मिले। मुझे पता चला कि कहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं, और नेशनली नहीं इंटरनेशनल भी। उसमें मैंने इंटरनेशनल में बोलूँ तो मुझे पता चला कि चाइना में पूरा फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है, और वो लोग इतना अच्छा एक्सपोजर देते हैं। तो फिर मैंने चाइना के बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट किया, सप्लायर मैन्युफैक्चरर से। फिर मैं चाइना गई। चाइना जाके मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देखे वहां पर मुझे बहुत सारे, क्योंकि वहां पे कंट्रीज अपना स्टॉल लगाती हैं। इंडिया की तो सब बड़ी बड़ी कंपनीज है ही, लेकिन वहां पर दूसरे दुनिया की, कोरिया की, जर्मनी, इटली, वियतनाम, अ, ऐसे बहुत सारे अच्छे वहां पे मुझे प्रोडक्ट्स देखने मिले। साथ में मेरे हस्बैंड भी थे, तो जो केमिकल में उनको भी काफी इंटरेस्ट आने लगा ये सारी चीजों को देखे, एक्सपोजर देखे। तो इस तरह से मेरी इंडस्ट्री कुछ आगे बढ़ने लग गई। लेकिन मैं पार्शियल फाइल देता हूँ। लेकिन उसमें एक और चीज थी कि एमआईडीसी में मेरी ज्यादा कांटेक्ट नहीं थे या मेरा नेटवर्क नहीं था, तो मुझे एमआईडीसी में जगह नहीं उस टाइम मिल पा रही थी। तो मैंने गांव में एक काम शुरू किया, अंजनगांव बारी। और अंजनगांव बारी में जब मैंने काम शुरू किया तो बहुत सारी मुश्किल आई वहां पर। रोड बनाना, डीपी लाना, और एक लेडी का काम करना, मतलब मैंने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी है, ऐसा समझ लीजिए। तो वो बहुत तकलीफ का समय था, लोगों का सोचना, और एक लेडी अगर इस तरह से काम करे। और मेरे हस्बैंड क्योंकि एडमिशन इंचार्ज थे, वो फुल प्लेज अपने कॉलेज में बिजी रहते थे।
तो उनसे हेल्प मांगना या फैमिली में किसी से भी हेल्प मांगना या अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरे लिए। तो जो करना था मुझे अपने आप करना था। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, और फिर लेकिन आगे उस इंडस्ट्री को वहाँ पर इतना अच्छा स्कोप आते चला गया। उस गाँव में सबसे बड़ी टैक्स पेयर हमारी कंपनी बनी। उस गाँव में मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ जॉब पर आए, और काफ़ी आस-पास में मुझे चैरिटी करने के भी काफ़ी मौके पड़े। मेरी लाइफ़ वहाँ पर पूरी चेंज होने लग गई। तो मुझे एक किसी का डिस्टर्बेंस भी नहीं था, तो उस तरह से मेरा जो डिसीज़न हुआ वहाँ पर काफ़ी अच्छा हुआ। अब इसके आगे अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रगल तो बहुत है, क्योंकि मुझे फिर पेस्टिसाइड में आना था, फिर मेरे अलग चैलेंजेस शुरू हो गए। तो हर ऑफ़िस में जाना, 4-4 घंटे खड़े रहना, फिर एक लेडी के साथ में कैसे बिहेव करना, और अ, जेंडर इक्वेशन ठीक है, आप कुछ जगह चलता है, कुछ नहीं चलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब से तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज भी मैं सोचती हूँ कि लाइफ एक ही मिली हुई है, इसको मैं कितना सार्थक बना सकती हूँ, और अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अगर ये बन जाए, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में आते हैं, तो हम अपने लिए नहीं आते हैं, बहुत लोगों के घर बसाते हैं, और उनकी लाइफ भी हमारे साथ में चेंज होती है, क्योंकि वो भी हमको पूरा अपना समय देते हैं, अपना जो उनका पोटेंशियल होती है, अपनी एनर्जी होती है, वो हमारे साथ में डालते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं कोरोना काल की बात करूँ, तो जब कलेक्टर उनका नोटिस आई थी, उसके पहले ही मैंने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी थी, और क्योंकि अगर वर्कर्स सेफ रहें तो ज़्यादा ठीक है। और इस तरह से जो भी मैंने स्टेप्स लिए हैं, प्रोएक्टिवली लिए हैं, जो बहुत हद तक सही भी गए हुए हैं। और अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की और बातें करूँ, तो फर्टिलाइज़र में उस टाइम कोई लेडी नहीं थी। इस तरह से फर्टिलाइज़र में आना, और आज भी जिस तरह के मैं काम करती हूँ, तो उसमें हैरानी होती है मुझे कि जब मैं लड़कियों को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, अभी भी मेरा मन होता है कि मैं लड़कियों को ज़्यादा प्रमोट करूँ। लेकिन मैं जब देखती हूँ कि लड़कियाँ खुद ही तैयार नहीं हैं उस चीज़ों के लिए, तो जब आप ही तैयार नहीं हैं, तो आपको सपोर्ट करने कौन आएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई जो बना है, बिना मेहनत के बना नहीं है, कहीं न कहीं उसका स्ट्रगल है, कहीं न कहीं उसकी स्टोरी है। लेकिन हमारा ये माइंडसेट है, स्पेशली मराठी माइंडसेट में एक होता है कि नहीं, ये चीज़ हमारी नहीं है, वो चीज़ हमारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमको ये सारी चीज़ें भूलनी चाहिए कि हमारा सोशल माइंडसेट क्या है, हमारी फैमिली माइंडसेट क्या है। अगर हम अपने कामों में फ़ोकस हैं, और हमारा विश्वास हमारी चीज़ों में है, तो उसको हमको प्रूव करना चाहिए कि हमारे डिसीज़न सही हैं, हमारा विज़न सही है, हमारा फ़ोकस सही है। ज़्यादातर आजकल की जनरेशन क्या करती है, ब्लेम गेम में जाती हैं, और ऑफ़िस को ब्लेम करती है, अपने काम को ब्लेम करती है, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को। और मुझे तो मतलब, क्योंकि मैं सारे मेरे पास में इंजीनियर्स भी आते हैं, सारे ये भी आते हैं, और मैं सारे लेवल के साथ में डील करती हूँ, क्योंकि हायर भी मैं ही करती हूँ, फायर भी मैं ही करती हूँ जनरली। तो मैं देखती हूँ कि एटीट्यूड का फ़र्क उनके बैकग्राउंड से ज़रूर आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जितना एक्सपोज़र है, आप अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हैं, आप अपने फ्यूचर का विज़न देख सकते हैं, और आप अपनी लाइफ़ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप ज़्यादा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, या ये चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ करने की जगह। तो इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस ये सब बात करता है। और जहाँ तक अब डिजिटल एज है, वो डेफ़िनेटली उसने अ, इंडस्ट्री को ही नहीं, पूरे दुनिया को तो बदल के रखा है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो 95% लड़कियों को ही रखती हैं, और बहुत सक्सेसफुल है। मेरी ही फील्ड की बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ मार्केटिंग में लड़के नहीं होते थे हमारे फील्ड में, फर्टिलाइज़र में, वहाँ पर आज लड़कियाँ बहुत हैं। मेरी इंडस्ट्री में ये सारा करने के बाद में मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि बहुत मेरा जो भी स्ट्रगल रहा है, अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अ, जो भी आप सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत कुछ मेरे साथ में हुई है। जैसे कि हम बोले धमकी बोले, व्यवहार बोले, तरीके लोगों के अलग-अलग तरीके के रहते हैं, वो सारी चीज़ें मेरी हुई। लेकिन वही पॉज़िटिव साइड में मैं देखूँ, तो मुझे बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़िसेज़ में जाने का मौका मिला है, उनके कल्चर को समझने का मौका मिला है, उनके सिस्टम को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला है, वो सक्सेसफुल क्यों हैं,
और उन्होंने मेहनत कितनी की है, वो हर एक मिनट को किस तरह से देखते हैं, हर एक काम को कैसे देखते हैं, हर एक प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं, बहुत सारी चीजें मुझे उनसे सीखने मिलती हैं। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में भी वो सारी चीजें हैं जो दूसरी जगह है। अच्छी चीजें बुरी चीजें हर जगह होती हैं। फाइनली आप कहाँ पे अपना फोकस करते हैं, कहाँ पर आपको अपना करियर नजर आता है, लेकिन जहाँ पे भी आता है मुझे लगता है उसको 100% आपको देना ही पड़ेगा। इतने सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ और मुझे बहुत अब सुकून मिलता है देख कर कि बहुत सारे ऐसे लड़के स्टाफ जो डेली बेसिस में भी थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ इन्वॉल्व थे, उनकी लाइफ कितनी बदली है, उनकी शादी, उनके घर का वास्तु, उनके यहाँ की माँ लक्ष्मी, उनके यहाँ के गणपति, उनके यहाँ के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने कंपनी के भरोसे ली हुई है और कंपनी में वो स्टाफ के नाते जो एंजॉय कर रहे हैं, मुझे ये सब देखकर उनके बहुत सुकून मिलता है। जहाँ मुझे कुछ भी चीजें नहीं आती थी, आज मैं बड़ी बड़ी मशीन की परचेज करती हूँ, बड़े बड़े मशीन चलाती हूँ 600 टन। और जिस तरह से मुझे सिर्फ चिप्स के तेल से संबंध था, आज मुझे वो हाइड्रोलिक मशीन हो, सर्वो मोटर्स हो, उसको समझना पड़ता है, उस लेवल पे भी अपने नॉलेज को ले जाना पड़ता है और उसके लिए मुझे कंटिन्यूस सीखना पड़ता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ आज भी, और हर अच्छी चीज जो मेरे बिजनेस को आगे ले जा सके, जो हर अच्छी चीज जो मेरे को आगे ले जा सके, एनरिच कर सके, मैं वो आज भी वो सीखती हूँ, ऑनलाइन हो या क्लास हो। उसके लिए मैं वो इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मेरे स्टाफ के लिए वो मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ। आज जब मेरे पास में मैं कहीं किसी खुद अपने पेट्रोल के पैसे हमारे घर में गाड़ी में नहीं भर सकते थे, तो आज मैं हर अपने नियर डियर्स को तीर्थ स्थान पे भेजती हूँ। मुझे पता होना चाहिए उसकी मन की इच्छा क्या है, तो मैं कहीं तीर्थ स्थान भेजती हूँ। मैं अपने स्टाफ को जो मेरे हर साल 200 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल टूर्स देती हूँ, कई टूर्स में मैं भी साथ में रहती हूँ, और उन टूर में जब उनके साथ में जाती हूँ और मैं बेस्ट टूर देती हूँ कि वो भी जिंदगी भर ना भूल सके। मैं ऐसा समझ के मैं खुद वो उनके टूर डिजाइन करती हूँ। मुझे मालूम है कि उनका ये लाइफ में बहुत, अगर वो कभी गोल्डन मोमेंट्स को याद करेंगे तो ये उनके इसमें आना चाहिए। तो थॉमस कुक मेरा पार्टनर है उसमें, और उसके साथ में जब मैं जाती हूँ तो मुझे उनके चेहरे की जो खुशी है वो देखकर बहुत खुशी मिलती है। माउंट एटलस में जब मैं ऐश्वर्या राय के एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ, और तो मुझे अपने इंडिया पे प्राउड फील होता है। ऐसे ही ये जॉन्फ्रो में अगर मैं यश जौहर को देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे मुझे यहाँ, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें मिस होती। दुबई अगर में आप जाते हैं और वहाँ पे सलमान खान वगैरह के बैनर चलते रहते हैं, अरे मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत कुछ और अच्छी हो सकती थी। और अगर मैंने बहुत सीरियसली ये सारी चीजों को सोचा तो, और मैं बहुत लोगों को बहुत सुख दे सकती थी। तो इस तरह के मेरे सपने रहते हैं कि मैं अपना बेस्ट क्या दे सकूं और अपनी इंडस्ट्री को कितनी ऊंचाई पे ले जा सकूं। लेकिन एक समय में मैं पल्ला लेने वाली और बहुत दबी दबी रहने वाली, कहीं अपने साथ में कहीं नहीं जा सकती थी। और मोपेड जो मैंने सीखी, जो पैसे जमा करके, तो धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसमें जितने आनंद से मैं चलाती थी, वो सारी चीजों को याद करती हूँ तो वो सारी चीजें आज बहुत मेरे लिए सेटिस्फाइंग है, फ्रूटफुल है। क्योंकि मुझे डीआईसी का फर्स्ट अवार्ड मिला, वो भी मिनिस्टर प्रोटेम पाटिल उनके साथ में, और वो उन्होंने मुझे एजुकेट किया कि अवार्ड रहता है, आप मैडम लो। उसके बाद में विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर में गडकरी जी, उनके साथ में वो मुझे अवार्ड मिला, बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर एक्सलेंस अवार्ड, सुभाष जी, डॉक्टर सुभाष जी देसाई, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर, उन्होंने मुझे वो दिया। उसके बाद में खुद उन्होंने मुझे जब बोला कि सुनारे मैडम तुम्हें 2 शब्द बोला, तो मुझे लगा रे मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे मोमेंट मेरी लाइफ में आए जो मैंने कभी सोचा ही नहीं, फिर मैं मेरा वो रास्ता रहा। और गोल्डन मोमेंट की बात करूं तो जब ये पॉलिसी बन रही थी, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, और इस पॉलिसी में मुझे मिनिस्टर उनके साथ में डेवलपमेंट कमिश्नर हर्षदीप कांबड़े, उनके साथ में दीप प्रज्वलन करने के लिए इनवाइट किया गया। और मतलब मुझे भी पता नहीं कि मेरा कैसे उसमें ये आया, लेकिन मैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद मैंने दिया
जो लोगों ने मेरे साथ काम किया, जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरी टीम मेंबर है, जिन्होंने मेरे पर विश्वास दिखाया, और उन लोगों ने जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, madam. There is the Sanskrit proverb that Nari Samajasya Kushal Vastukara. You are real architect of your life. Madam, from her speech, I observe that madam has the vision to map her resources and to utilize her resources. She mapped her resources, she found her own path and become an iconic lady of this region. Thank you very much, madam. You portray your journey, entrepreneurial journey, especially for all our participants. Thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. Okay. I want to add one more thing. Your journey, it is really inspirational for all my students, those who are attending here. There are just now what you have told in your life, the different problems, the challenges, whatever you have faced, and now you are at this particular moment. The rest of the world is looking towards you as a role model, and all the girls, those who are studying nowadays, they can take the inspiration from you, and we can have certain good dialogues for the future incoming certain endeavors, so that we are able to do certain collaborative work for the betterment of our students and for the university. So thank you very much, madam, for your inspirational work for my students. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you, Satishwarikar madam. Then I would like to invite our chairperson of today's lecture, Head of the Department of Computer Science, Professor Dr. V.M. Thakre sir. I request Thakre sir for delivering his welcome address. Thank you, madam. Presidential address. Thank you, sir. Thanks a lot for inviting me to express my views on this occasion. First of all, I express my many best wishes, best compliments on the occasion of this International Women's Day. And especially on this occasion, I was just hearing the story of entrepreneurship story of Sonare madam, and I thought we have a perfect guest on this occasion on behalf of this International Women's Day. The very inspirational story madam has depicted here, placed here, and it will be useful to all the students, incubators, entrepreneurs, and those who are willing to come in this field. So, for today's this International Women's Day celebration, Honorable Vice Chancellor, today he will be joining to this program. He was busy in one another program. So, Honorable Vice Chancellor Malkhade sir, Director of the Incubation Center and IIL section, Dr. Satishwarikar madam, Registrar of the University, the anchor of this program, Sevigda madam, all the faculties, those who are connected with this program, all the students, HODs, and the authority members of various authorities of the universities, media persons, and all others, entrepreneurs, innovators, incubators, and those who are willing to start their some innovative ideas center, all those who are attending. I express my sincere thanks towards Sonare madam
that she has come here and inspired everybody with her entrepreneurship development. How Madam could enter in this area of entrepreneurship when she was not having any entrepreneur background. That is important. So, dear students, entrepreneurs and incubators, the story depicted by Sonali Madam is really motivational for everybody, that when Madam was not having any background of entrepreneurs, but just Madam was having the strong desire, strong willpower that, yes, I have to do something. I must do something. I will not sit at home. I will be busy. But see, dear students, that keeping a dream, keeping the aims is not only the way to adapt some things, but willpower, the motivation, and the inspiration of doing something is most important to go forward. What you can understand from the story depicted by the Madam. Madam was self-inspired, self-promoted, self-developed, and having the aims that something should be done. This was most important from the story. And if everybody keeps this direction of doing something and go ahead or achieving that aim. So, observing the dreams it does not require anything. It is possible for everybody. And do something, go forward, achieve your dream slowly, pursue it, follow it, and run behind it. That is a short message of this or entrepreneurship story of Madam. The student has to follow such type of ways and directions. Madam has started her entrepreneurship career when there was no any guidance, no any background, no support from the institutions, no support from government, no guidance from anywhere. In such situation, Madam has started to fulfill her dream. But now you see, you are having lot of sources for promoting your ideas. In every institution, there is hobby center, innovation center, idea center, entrepreneurship cell, then guidance cell, then incubation cell, pre-incubation cell, startup cell. So many schemes institutions are doing for the students, and so many schemes government is also launching. See, just for example, today government has so many schemes. Some of the schemes I will tell you: Startup India, Stand Up India, Innovate India, Skill India, Atmanirbhar Bharat. These are some of the schemes, and under this scheme, government is supporting a lot in various directions. And I think if we keep interest in such a field, if we are having some aims, some dreams in entering into this field, then a lot of information is available today on the internet. Madam entered in this field when there was a very poor support of the information and information technology arena. Now
every information is available at your fingertips. Just search. Very famous word here is Google. Google it, you will get every information. Means information support and guidance is readily available in your mobiles. Now, no laptops are required, no computers are required, nothing. Those days, I remember this computer, starting a computer, using a computer and connecting it to the internet was a very big task. It was a task as good as starting one new enterprise. Instead of doing this, people used to imagine that going behind this, instead of do our job and go ahead, pursue our ways. Now, in this era of information technology, we are having so many facilities. And these facilities are available in such a way that government is ready to help at any extent in any way. And there are a lot of supports given by government under these schemes. In syllabus also, we are keeping such type of avenues. Those will be useful to the students. Government is also establishing so many various departments, various sectors to guide students to go ahead in this field. Because one very good, our mentality example I can give. After passing 10th, if we ask any student what you want to do, they will say, नहीं अभी मैं 12वीं करूँगा, बाद में ग्रेजुएशन करूँगा, ग्रेजुएशन किस में करूँगा, I will think, means 12वीं करना ये तो है ही उसका है, बाद में ग्रेजुएशन करना, लेकिन ग्रेजुएशन किस में करना ये भी उसका 10th के बाद में डिसाइडेड नहीं रहता. Means directions and becoming a more directional. He never thinks of that. Then he becomes 12th. He pass up from 12th class. Then you ask to any student what you will do, what you are going to do. He will say, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई सीए, कोई ये. But nobody will say, मुझे एंटरप्रेन्योर होना है. At the age of passing 12th, nobody is having the idea of such field that इसमें हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़े बन सकते हैं, और there are the unlimited opportunities in this field. They don't know, and nobody guides. Nobody supports him also. If he says after 12 that I want to do business, I want to enter into some this business process, everybody will discourage him. This is the today's scenario. But this area is so vast that it has unlimited opportunities. And if you see the education sector, in education sector, government has changed the way of giving the education totally, because in new act of university, government has created incubation and linkages section, department in every university, and government is spending a lot on this section that incubate the ideas, promote the ideas, convert into startups, conduct various activities so that students will know that there are very large opportunities in this field. And government has given so many different schemes also. And in syllabus also, we are keeping the component of skill development.
In Amravati University, in computer department, first time we have implemented the syllabus, which is most flexible and which caters the needs of ideas of the student. Not only needs of the student, but needs of the ideas of the student. How we have designed the syllabus? Syllabus was divided into 4 parts: core subjects, professional subjects, electives, and open electives. And here, the first part, fundamentals he study. Second part, professional. In professional part, he studies the skill sets which are required for, say, our subject is computer, so skill set of the computer. And in electives, he adopts the subjects which are of his interest, but list is there. He had to select the subject from the list. So there is a restriction. Restriction on what? Restriction of his ideas. That his ideas are restricted for the limited number of subjects. But now, a fourth component, which we have introduced, that open elective. Open elective part has no limitation to select his own field of interest, own field of dreams, own field of aims and objectives, because we have kept 10 such components in the open elective. In this open elective, he can go for project, he can go for live project, he can go for industrial project, he can go for industries, online courses, online training, Swayam, MOOCs. Then if he is interested in research, he can go for conferences, he can publish paper. If he is interested in any other hobby, he can add up interdisciplinary studies, even entrepreneurships subject or internship training he can get. Later on, some different health-oriented programs also we have provided there, like yoga trainings, etc. And lastly, but not least, he can take the different types of subjects training, like financial, banking, some arts, some cultures, some industries, any type, just like Madam told you in her speech, that she used to go in library and read the books. So this is possible in our open elective. So there is no limit on adapting any type of idea in open elective. That such type of syllabus design were implemented first time in MCA and other courses. Why this was implemented? Because the flexibility was the main aim, was the main this idea behind that. Keep the syllabus flexible, because every educational body tells us that you should provide flexible education. What flexible? That students should adapt whatever you want. So keeping this concept, we have designed such type of portions for the students. And UGC, AICTE, NAAC bodies, NBA bodies, state government, then higher education departments, higher education institutions tells us that let the students study whatever you want. Let the idea of the students flourish. So this was the aim regarding keeping the open avenues for the students through syllabus. Now, syllabus is also supporting. In old days, we used to ask student, why you are reading this? Is it in your syllabus? Then don't read this. Don't do this. It is not in the syllabus. Don't do that. That is not in the syllabus. That means every time we used to pinch student that do as per syllabus, don't do this and don't do that. But now our ideas have totally changed, totally in opposite direction. Let the student do whatever you want. Don't scold him. Don't stop him. So idea, incubate his idea, flourish, let his idea flourish. Don't kill his idea. Don't restrict his idea.
let his idea grow. And for growing his idea, Madam can tell, we are having very much various different types of schemes like pre-incubation. Our IIL section, under the guidance of Kerekar Madam, is trying to open pre-incubation centers to every college. And what is the idea behind incubation is to incubate, to develop, to inculcate the ideas of the students and come to the pre-incubation center with some idea, and pre-incubation center will help them to implement the idea, guide to do something, to implement and innovate, or something to go forward regarding development of his idea. So motto is that incubate and inculcate his ideas. Don't stop his dreams. Don't stop his thinking. So ideas come from thinking. Thinking comes from dream. And dreaming is the right of every person. So why you want to kill his dream? By stopping his ideas. This is the way how the education field is now helping students to grow the ideas through pre-incubation, incubation, startups, venture capitalists, and so many different ideas were kept through the incubation center under the guidance of Kerekar Madam. And then state government is also giving so many schemes. Central government also giving so many schemes. I come to attend. It was just by opportunity, and because I heard that there is some program in TV, and I try to attend that program on TV. It was such an inspirational program. That program was conducted by the chairman, state government chairman of Stand Up India scheme of the government. And he narrated the story of how Stand Up India supporting to the students, incubators, entrepreneurs, and idea holders to promote his business, to promote his ideas, to promote his startups. So he said that anybody can come with his own idea, just give idea. He can dream. He can tell his dream to the Stand Up India. Then they will tell his dream. They will place their dream or idea or just a plan of business to the venture capitalist, and they will pick up the idea. If they think that yes, idea is good, they will pick up the idea, and they will spend crores of rupees. And he said that nowadays for venture capitalists, 5 crore and 10 crore is nothing for them. They just make the experimentation with 5 crore to 10 crore amount. Even if the idea fails, they will not bother, because they are having such a strong willingness to support the ideas. And if they think that yes, something will come up with through this idea, they will spend 5-10 crore. Even if idea fails, they will not bother, but they will try to develop that idea, and maybe they will try to come up with strong business through these ideas. So ideas are important, and that's why on the occasion of this International Women's Day, we are promoting the program of Ideathon. This Ideathon program, Madam has launched. We have launched on the occasion of International Women's Day, and the purpose of this program itself is to develop the ideas, put up your ideas on the paper. And if the ideas are new,
if it is innovative, and if business people or some experts, our expert committee thinks, yes, ideas are good and it will work and it will give something new to the people, then develop the ideas. So through this ideathon, this is our attempt to develop the ideas of students and support them, encourage them to enter, to develop their dream, come out to fulfill their dreams. So this is what today the scenario is in the area of today's information technology. Lots of jobs are available, lots of opportunities are available. Engineering field now is flourishing field. There is no dearth of job, and job required skills. Our syllabus is trying to give the skills to the students also, but there are separate skill development departments also in university to develop the skills, so that job placements will not be a problem for students. And nowadays, fortunately, scenario is very good. The placements is good, employment is good, and engineering section, because the engineering section is flourishing. Every engineer in every branch, he may be in civil, mechanical, electrical, electronics, IT is not a problem at all. But in even in spite of IT and computer science, in other fields also, the jobs are ample and they are getting the job. But even though jobs are ample, the ideas coming up through the minds of the students are important, and going behind the job is not the only way. Be the job giver rather than job seekers. We always tell them, but it may happen that now the jobs are ample, so students easily think of going for the job instead of going in the opposite way of entrepreneurship. And it is not opposite way that way, because entrepreneurship may be a different way, may be a way which does not give you the salary immediately, but definitely if you go into entrepreneurship, the students, huge salary will be there rather than taking a fixed salary in the job. So be your own boss. Start your ideas, develop your ideas, develop your team, and be your own boss instead of working under so many bosses in the industry, in government jobs. And those who wants to go in some relaxed job, they will say that nahi, mujhe government job chahiye. सर तुमचा माइक ऑफ झाला. Yes. So, dear students, we must think big. We must think of our dreams rather than think of our jobs. So, just now I told you that after passing 12th or after getting a degree, we search a job. Instead of searching job, why you don't go for developing ideas? Why you don't go to fulfill your dreams instead of searching a job, and instead of taking a fixed salary, and instead of becoming an employee of a certain company, certain startup? Be the owner of startup, be the entrepreneur. Even though you will not get immediate salary, but definitely salary will be 10 times within short duration if you pursue your dream, and if you follow, if you take persistent actions to fulfill your dream, definitely it will happen. So, dear students, again, I will advise you to follow the guidance given by successful entrepreneurship like Sonare Madam, and follow the ways
and dreams of becoming entrepreneurs. I wish all and wishes on occasion of this International Women's Day. And I end up my speech here. Thank you. Thank you, Professor Dr. Thackeray, sir. Your words are inspirational. Always, they are always inspirational for us. You motivate all of us. Sir, you have explained the roadmap for the whole pathway from the student to an entrepreneur. And at the same time, you also explained the role of these linkages and incubation to become productive, to convert your innovation into the product. So you explained very well, and I hope the student will get some inspiration and they will come with some innovation and bring their to the incubation and bring their product. And for the linkages, the platform is there. Our director, madam, she is always there to support all the students. Thank you very much, sir. Again, sir have explained the ideathon. I would like to, before going to thanks or before concluding this lecture, I would like to again explain, this is the women-led ideathon. Through these innovations, this is the innovative concept, and it is announced on the International Eve of International Women's Day, because this is the time for brainstorming for the safety of the women. This is the challenge. This is the unique opportunity to stretch your minds and challenges. What you think for the welfare, equality, and fairness of women. And I think Women's Day is the appropriate time to announce this competition. And our director, Sharikar Madam, has announced, and it is open from today only up to 10th March. The 3 days, the link will be open for all of the students, researchers, students, faculty. It is open for all. And the sub-themes are any faculty, any students can work on these, because you have the idea on the various aspects. The self-defense, the sub-themes are self-defense. You may have some gadgets, or you may have some idea for the self-defense of the women. Then health and hygiene. This is the need of the time, because women health is the most neglected from in the Indian scenario. Then entrepreneurship is again the challenging area. You can put up your idea through this ideathon for development of this entrepreneurship. Then technology for women. Then legal aid. How your idea that legal aid can be reached to the needy person. That is the most important. And safety and security of the women. That is again the global problem. So we have any idea you can submit through this Google form, and all these idea will be screened. Again, madam have announced that there is the prize and certificate also. So this is the competition, and I hope all will be contribute something, because idea, every person has their own experience, they have their own ideation, so they can participate in this competition. I hope there will be many more entries in this competition. And if you have any doubt, Sharikar Madam is in the campus, Thackeray sir are available in the campus, I myself is available in the campus. You can contact us and you can
but you participate in this competition. So this is the ideathon. I hope all of you will be participate in this competition. So the last part of the program is the Thanksgiving. I am here for proposing vote of thanks. I took the opportunity to express my gratitude. Then there's it. Sharika, madam, you want? I express the gratitude to Honorable Vice Chancellor of the University, Dr. Dilip Malkhede sir. Sir has always, she is very meticulous regarding this program of IIL and the whole university. Thank you very much, sir. Then today's chairperson, she is Dr. Nisha Sonare madam. She is the real icon. Madam has illustrated her journey very well, and I feel that her journey is the journey of every entrepreneur. So, madam, you have illustrated your journey in very lucid manner, and I think the student may have get motivation, inspiration from your speech. Thank you very much, madam. I express thanks to all the authorities of the university. I express my thanks to the registrar of the university for giving all the permission and opportunity to celebrate this International Women's Day. Thank you, Dr. Tushar Deshmukh sir. Then all the head of the departments, they have raised their hands of the support for us and have joined this program. Thank you very much, sir. All the faculties of the university, then PRO of the university and the media person, those who have joined this program, I express my thanks for them. I express thanks to all the participants who have joined through the Zoom link as well as through the YouTube live streaming. Thank you very much. And I express my thanks to all the teaching and non-teaching staff of the IIL and as well as the Department of Computer Science, those who have helped us directly and indirectly. Thank you one and all. My best wishes to all of you on the eve of International Women's Day. Thank you very much, madam. Over to Sherikar, madam. Madam, do you want to? It's my request to all the participants just to put your camera on to have the photograph. कर दे पटाख से लिया 2-3 मिनट. Thank you one and all. We will take your leave and wish all the happy International Women's Day. Thank you. Thank you very much, madam. Thank you.